Hello learners. In the previous video, we discussed about transmucosal route of drug administration. In this video, we will cover transdermal and inhalation route. Okay. Let's start. Transdermal route कौन होता है? Now the drugs which are high lipid soluble can be applied to the skin for slow and prolonged absorption to achieve systemic effect. तो से ड्रगटा कोठी अप्लाई करा जाए ना स्किन रे अप्लाई करा जाए रब करा जाए ओके सेटा हाई लिपिड सल्युबल होता है स्किन रे रब करा जाए कहीं ना सेटा जेमती स्लोली और प्रोलंग्ड एब्जॉर्प्शन हो पारिबो स्लोली स्लोली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे कि एब्जॉर्ब हबो एंड देन सिस्टमिक इफेक्ट को शो करिबो सेटा को ही हमें कहूछु ना ट्रांसडर्मल रूट ठीक अच्छे तो स्किन रे अप्लाई करथाउ जो ड्रग को दैट इज ट्रांसडर्मल रूट The drugs which are high lipid soluble can be applied to the skin for slow and prolonged absorption to achieve systemic effect. Yes, there are example कौन ना application of a nitroglycerin ointment in angina pectoris. तो angina pectoris disease जेतबळे हुए तो सेतबळे हमें कौन करथौ ना nitroglycerin ointment को superficially use करथौ. Angina pectoris कौन ना it is the insufficiency of a blood supply to the heart muscle. जेतबळे heart muscle को सफिशिएंट अमाउंट रो ब्लड सप्लाई हे न थाए ताको हमें कोन कहि थाउ ना एंजाइना पेक्टोरिस सेतबे हमें कोन अप्लाई करछु ना नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट जेतबेले हमें नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट को रब करथौ स्किन रे सेतबेले कोन हे थाए ना ब्लड सप्लाई हार्ट मसल को सफिशिएंटली हे थाए ठीक अछि नेक्स्ट इनक्शन एडहेसिव यूनिट्स आयोंटोफोरेसिस एंड जेट इंजेक्शन आर सम फॉर्म्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी मेथड्स तो इनक्शन adhesive units iontophoresis and jet injection एगुडा सब कहा अंडर आछि ना ट्रांसडर्मल अंडर रे हमें गोटे गोटे डिस्कशन करबा व्हाट इज इनक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रब्ड ऑफ ड्रग्स इनटू द स्किन आमे जेतबेले किछि ड्रग्स को स्किन रे रब करूछु सेटा को ही कोन कहै छै ना दैट प्रोसेस इज इनक्शन कि आमे जे कोनसी क्रीम हैला लोशन हैला किबा ऑइंटमेंट हैला आमे कोन करथौ ना स्किन रे रब करिकरी कौन करता है ना सेटा सिस्टमिक इफेक्ट शो करता है स्किन कौन करता है ना एब्जॉर्ब करता है से ड्रग्स को देन प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट्स दैट इज इनक्शन देन एडहेसिव यूनिट्स कौन होता है ना द एडहेसिव यूनिट्स the adhesive patches of different sizes and shapes are made to suit the area of application जो एरिया रे इंजुरी हेइथिबो सेही एरिया रे हमें कोन यूज करछे ना एडहेसिव पैचेस ए एडहेसिव पैचेस कोन पे हेल्प करथे ना सी गोटे मेम्ब्रेन तर थाए जे कि पोरस मेम्ब्रेन हेइ थाए आ से कोन कंटेन करथे ड्रग कंटेन करथे जेतबेले हमें ताको यूज करू कोनसी इंजर्ड पार्ट रे सेतबेले हम अनब्रोकन किछ स्किन थाए अनब्रोकन मसल जो सॉरी टिश्यू हैला कि सेल हैला से कौन करे ना ताको एब्जॉर्ब करे स्लोली एब्जॉर्ब करे से ड्रग्स को दैट इज परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन ठीक अछि ताको परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन कहंती ताले सुनो ना द एडहेसिव पैचेस ऑफ डिफरेंट साइज से प्रासी थाए आउ से कौन करथे ना जो इंजर्ड पार्ट को जो इंजर्ड एरिया को कौन करथे है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करथे है दैट इज मेड टू स्वेट द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ठीक अछि नेक्स्ट होछि द ड्रग इज हेल्ड इन ए रिजर्वायर से ड्रग टा रिजर्वायर रे हेल्ड हे कि थाए बिटवीन एन आउटर लेयर एंड ए पोरस मेम्ब्रेन ठीक अछि एते बुझेला दिस मेम्ब्रेन इज स्मीयर्ड विथ एन एडहेसिव टू होल्ड ऑन टू द एरिया ऑफ एप्लीकेशन देन आफ्टर एप्लीकेशन द ड्रग इज स्लोली डिफ्यूज्ड थ्रू द मेम्ब्रेन एंड परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस कहली परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन कौन ही थे देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल यूजुअल साइट ऑफ एप्लीकेशन आर चेस्ट को जगह यूज करा जाए ना चेस्ट एब्डोमेन अपर आर्म बैक और मास्टर्ड रीजन को ड्रग्स यूज करा जाए जमती कि एग्जांपल देछि हायोसाइन नाइट्रोग्लिसरीन फेंटानाइल एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन ट्रांसडर्मल पैचेस ओके देखि दियो तार पिक्चरटा एई भली भाबरे यूज करा जाए ठीक अछि एटा होची हमर कोन ना एडहेसिव पैचेस ठीक अछि नेक्स्ट आयोंटोफोरेसिस कौन होता है ना हियर द galvanic current brings about penetration of liquid insoluble drugs into the deeper tissues where the action of drug is required जो जगह ड्रग्स टा दरकार हे थाए सेही जगह रे कौन हे थाए ना आमे ताको यूज करछु एटा गोटे कौन हे थाए गोटे डिवाइस हे थाए देखो गोटे डायग्राम शो करछि देखो आयोंटोफोरेसिस डिवाइस
रे कौन होची ना गोटे दीटा साइड तार रोचे गोटे होची ड्रग इलेक्ट्रोड आ गोटे होची काउंटर इलेक्ट्रोड ड्रग इलेक्ट्रोड जोटा सेटा होची पॉजिटिव चार्ज कंटेन करची दैट इज एनोड देन काउंटर इलेक्ट्रोड जोटा रहिला हैला काउंटर इलेक्ट्रोड जोटा एटा एटा नेगेटिव चार्ज कंटेन करची नेगेटिव मींस कैथोड ठीक अछि आ जोटा ड्रग इलेक्ट्रोड सेटा होची पॉजिटिव चार्ज कंटेन करची दैट इज एनोड देखो ड्रग एठी अछि ठीक अछि एटा होची ड्रग एंड दिस इज द मु तुमको फर्स्ट रे कहिली कोन एटा हेई थे ना लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग्स राइट लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग्स तो एटा होची लिक्विड इनसॉल्युबल ड्रग्स जे कि माने जहाँ को हमें प्रेशराइज करी फोर्सफुली कौन करुचे ना जो जगह तार आवश्यकता अच्छी जो जगह नीड अच्छी तार से जगह को हमें फोर्सफुली पेनिट्रेट करुचे फोर्सफुली पेनिट्रेट करी ड्रग को प्रोवाइड करछे ताकि से सिस्टेमिक इफेक्ट शो करि पारे ठीक अछि देखो ड्रग इलेक्ट्रोड यूज करा जाउची ए ड्रग को फोर्सफुली कौन करा जाउची ना पेनिट्रेट करा जाइकरी ब्लड सप्लाई करा जाउची ठीक अछि कौन करा जाउची ना ब्लड सप्लाई रे सेटा को कौन करा जाउची ना सेही ड्रग को माने प्रोवाइड करा जाउची ताकि से तार सिस्टेमिक इफेक्ट शो करि पारो एट लिखा है ब्लड वेसल ओके एटा ब्लड वेसल एटा स्किन एरिया ओके बुझिला ना नहीं एटा होची आयोंटोफोरेसिस तार एग्जांपल रे ड्रग्स कौन सब अछि ना साइलेट्स फ्लोराइड आयोंटोफोरेसिस इन डेंटल हाइपरसेंसिटिविटी ठीक अछि ये कोड यूज करा जाए ना डिपर टिश्यू देखो हियर द galvanic current brings about penetration of liquid insoluble drugs into the deeper tissues where the action of drug is required जो जगह दरकार ही थे सही जगह को फोर्सफुली कौन करा जाए ना से ड्रग्स को पेनिट्रेट करा जाए through the galvanic currents okay next jet injection dermojet causes the absorption of drug occurs across the layers of the skin तार अर्थ कौन है ना डर्मोजेट गोटे डिवाइस ही था ठीक अच्छे ता थ्रो रे आम ड्रग्स को सेमती इनसर्ट करथाउ कहा कोठी कि ना स्किन रो लेयर भितर को देखो तार पिक्चर देखिले तमे जानि परिबो देखो एटा गोटे नॉर्मल यूज करा जाउथिबा निडल एटा ठीक अछि नॉर्मली यूज करा जाउथिबा निडल एटा देखो एटा डर्मोजेट ठीक अछि जतबेले हमें गोटे यूजुअल माने गोटे नॉर्मल निडल रे ड्रग को माने इंसर्ट करूचे तो देखो एठी केमती ड्रग गुडा एई हिसाब रे आसीगिरी डिपोजिशन हेई जिवो किंतु जतबेले हमें डर्मोजेट यूज करछे स्किन ऊपर आमे तार जतबेले अप्लाई करछे स्किन ऊपर तक अप्लाई करछे सेतबेले देखो केमती हेइछि ना एई जगह रे देखो पूरा सी स्कैटर्ड फॉर्म रे पूरा कहिछि ना अब्जॉर्ब होछि फुल्ली अब्जॉर्ब्ड देखो जो टिश्यू द्वारा पूरा पूरा जो स्किन रो लेयर रे से पूरा कोन हिछि ना अब्जॉर्ब फुल्ली अब्जॉर्ब्ड परफेक्टली अब्जॉर्ब हिछि किंतु जतबेले हम निडल रे दउछे सेतबेले गोटे जगह रे डिपोजिट हे जाउछि बुझि होछि एटा बुझिला ना डर्मोजेट causes the absorption of drug occurs across the layers of the skin okay that is jet injection एटा हला jet injection next implantation कौन ही थे ना it means planting or putting of solid drugs into the body tissue to achieve systemic effect implantation कौन ही थे ना गोटे drugs को हम implant करथाउ बॉडी रो टिश्यू रे ठीक अछि सेटा सॉलिड ड्रग्स हे पारे केमिति हे पारे देखो माने एमती इम्प्लांट गोटे ड्रग्स रे नेम देखो छी तार पिक्चर एई भली भाबरे सेटा कोन हे थे ना इंसर्ट करा जाय सेटा कोन हे थे ना इम्प्लांट तार ना से ड्रग रो ना होची इम्प्लानन तार इम्प्लांट केमति होची ना एटा कोन पे हे थे ना इट इज यूज्ड एज अ कंट्रासेप्शन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी राइट
तो आम पढ़ीचे प्लस टू रे कि ये जो इम्प्लांटेशन कौन पे करा जाउछि ना प्रिवेंट द प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करबा ପାଇଁ कि एटा गोटे कंट्रासेप्शन भाबरे यूज करा जाय the medicine is contained in a small plastic rod that is implanted into the skin of your upper arm देखो तार अपर आर्म रे इंसर्ट करा जाउछि आ गोटे पिक्चर भी देखो तार कोठी इंसर्ट करा जाउछि से केमिति का हेथै ठीक अछि it is a small plastic rod okay that is implanted into the skin of your upper arm तमरो अपर आर्म रे सेटा कोन करा जाय ना इम्प्लांट करा जाय कोन ପାଇଁ कि to prevent the pregnancy it means planting or putting of solid drugs into the body tissue to achieve systemic effect. Now clear? Next, inhalation. Through inhalation, volatile liquids and gases are given in general anesthesia. The inhalation through रे कौन करा जाए ना जनरल एनेस्थेसिया भी दिया जाए तुमको जेमती कि सेटा वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म रे थाए वोलेटाइल मींस जहा को इजीली वेपराइज करा जाय परिबो इजीली वेपराइज करा जाय परिबो in the form of gases सेटा भी देछि and gases are given in the general anesthesia also the solutions of drug particles and the fine droplets are inhaled as aerosol mean कोन ना जे कोन कंटेन करथिबो ना जे तुम इजिली कहि परिबो it is a suspension of fine solid particles or liquid droplets in our in air or another gases तो ये कौन ही था ना गोटे सस्पेंशन टाइप रे फाइन सॉलिड पार्टिकल को कंटेन करता है जेमति कि से लिखि छी सॉल्यूशन ऑफ ड्रग पार्टिकल्स एंड फाइन ड्रॉपलेट्स को कंटेन करता है जहार ना होची एरोसोल टाइप रही यूज करा जाए तो एरोसोल स्प्रे अच्छी बहुत सारा एरोसोल रो टाइप्स अच्छी तो एठी हमें एरोसोल एज ए इनहेलर भाबरे यूज करूचे तो हेल्थ केस रे ओके तार एग्जांपल कोन आछे ना सॉल्ब्यूटामॉल को हमें कोन करूचे ना माने इनहेलेशन करथे है जेंति आस्थमा कंडीशन रे ठीक अछि देखो तार एरोसोल केमती देखा जाए एटा इनहेलर कहि था ना को दिस डिवाइस एटा को कहि न था कि इनहेलर ठीक अछि सेटा को ही एरोसोल कहंती देखो सॉल्ब्यूटामॉल इनहेलेशन तो मु तार एग्जांपल भी देले सॉल्ब्यूटामॉल को ही कोन करा जाय ना यूज करा जाय थे थ्रू इनहेलेशन volatile liquids and gases are given in general anesthesia also the solutions of drug particles and the fine droplets are inhaled as aerosol for example salbutamol then patient inhales the particles and fumes into the lung which produce local or systemic effect the local effect शो करे और सिस्टेमिक इफेक्ट शो करथे तार एडवांटेजेस कोन कोन सब रहउची ना रैपिड एब्जॉर्प्शन हेइथे मोर इफेक्टिव हेइथे एंड लेस हार्मफुल हेइथे को केस रे ना पल्मोनरी डिजीज केस रे ठीक अछि नेक्स्ट hepatic fast pass metabolism is avoided then convenient heithay to control blood level of a volatile anesthesia as their absorption and excretion is through the lungs are governed by the laws of gases disadvantages kon rochi na irritant gases may enhance the production of pulmonary secretion किसटा गैस है जोटा कि इरिटेशन फील करे थे ठीक अछि सेटा को से कौन करते हैं ना पल्मोनरी सिक्रेशन प्रोडक्शन करते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो रे आगु को पढ़िबा ओके थैंक यू